Lesson 03. Dark, they were, and golden-eyed. गहरे रंग वाले और सुनहरी आंखों वाले लोग। Quote. Human change, not the climate change. About 1,000 Americans had moved to Mars due to fear of atomic war on Earth. They built earthen settlements there and life was pretty peaceful for except the main character of the story, Harry Bittering. He felt greatly disturbed due to some unseen virus present in the Martian climate. He was afraid of losing his identity. He eagerly wanted to build a rocket and go back to Earth, but no one supported his idea. All others felt at home Mars. At the end of the story, we are told that Martian environment had positive effects upon them. They became young and beautiful as their daughters and sons. They also became friendly and peaceful. They refused to go back to Earth. The author has indicated that there is something wrong with Earthen climate and not with Martian one. इक़्तिबास: इंसानी तब्दीली मौसमियाती तब्दीली नहीं। ज़मीन पर एटमी जंग के खौफ से तकरीबन 1000 अमरीकी मरीख पर चले गए थे। वो वहाँ मिट्टी की बस्तियाँ बनाते हैं और कहानी के मरकज़ी किरदार हैरी बिटनिंग के अलावा ज़िंदगी काफ़ी पुरअमन थी। वो मरीख की आबो हवा में मौजूद कुछ नादीदा वायरस की वजह से बहुत परेशान था। उसे अपनी शनाख्त खो जाने का डर था। वो बेताबी से रॉकेट बनाकर ज़मीन पर वापस जाना चाहता था, लेकिन किसी ने उसके ख्याल की हमायत नहीं की। बाकी सब ने घर मरीख पर महसूस किया। कहानी के आखिर में हमें बताया गया है कि मरीख के माहौल ने उन पर मस्बत असरात मुरतब किए हैं। वो अपनी बेटियों और बेटों की तरह जवान और खूबसूरत हो गए। वो दोस्ताना और अमन पसंद भी हो गए। उन्होंने ज़मीन पर वापस जाने से इनकार कर दिया। मुसन्नफ़ इशारा करता है कि ज़मीन की आबो हवा में कुछ खराबी है, ना कि मरीख के माहौल में। The rocket's metal cooled in the meadow winds. Its lid gave a bulging, a sudden increase that soon returns to the usual level, pop. From its clock interior stepped a man, a woman, and 3 children. The other passengers whispered away across the Martian meadow, leaving the man alone among his family. The man felt his hair flutter and the tissues of his body draw tight as if he were standing at the center of a vacuum. His wife, before him, trembled. The children, small seeds, might at any instant be sown to all the Martian climes. The children looked up at him. His face was cold. "What's wrong?" asked his wife. "Let's get back on the rocket." "Go back to Earth?" "Yes." "Listen." रॉकेट की धात घास की हवाओं में ठंडी हो गई। उसके ढक्कन ने एक बोतल के खुलने जैसी आवाज़ निकाली। उसके गोल अंदरूनी हिस्से से एक मर्द, एक औरत और 3 बच्चे निकले। दूसरे मुसाफिर मरीख की घास के उस पार सरगोशी करते हुए उस शख्स को अपने ख़ानदान के दरमियान तन्हा छोड़ गए। उस आदमी ने महसूस किया कि उसके बाल फड़फड़ा रहे हैं और उसके जिस्म की बाफ्तें इस तरह तन गई जैसे वो खला के मरकज़ में खड़ा हो। उसके सामने उसकी बीवी कांप रही थी। बच्चे, छोटे बीज, किसी भी वक्त तमाम मरीख के मौसमों में बोए जा सकते हैं। बच्चों ने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा जज्बात से आरी था। क्या गलत है? उसकी बीवी ने पूछा। चलो वापस रॉकेट पर चलते हैं। ज़मीन पर वापस जाएं। जी हाँ, सुनो। The wind blew, whining, to make a long, high, sad sound. At any moment the Martian air might draw his soul from him, as marrow comes from a white bone. He looked at Martian hills that time had worn, worn, with a crushing pressure of years. He saw the old cities, lost and lying like children's delicate bones among the blowing lakes of grass. "Chin up, Harry," said his wife. "It's too late. We've come at least 60 million miles or more." The children with their yellow hair hollered, shouted, at the deep dome, curved roof, of Martian sky. There was no answer but the racing hiss of wind through the stiff grass.
हवा एक लंबी, ऊंची, उदास आवाज निकालते हुए चल रही थी। किसी भी वक्त मरीख की हवा उसकी रूह को उससे खींच सकती है, जैसे सफ़ेद हड्डी से मीख निकलता है। उसने मरीख की पहाड़ियों की तरफ देखा, जो वक्त के तबाहकुन दबाव से घिस चुकी थीं। उसने पुराने शहरों को देखा, जो घास की उड़ती झीलों में बच्चों की नाजुक हड्डियों की तरह खोए हुए थे। खुश हो जाओ, हैरी, उसकी बीवी ने कहा, बहुत देर हो चुकी है। हम कम से कम 60 मिलियन मील या इससे ज़्यादा दूर आ चुके हैं। अपने पीले बालों वाले बच्चे मरीख के आसमान के गहरे गुंबद पर चिल्ला रहे हैं। सख्त घास में से हवा की दौड़ती हुई सस्कार के सिवा कोई जवाब नहीं था। He picked up the luggage in his cold hands. Here we go, he said, a man standing on the edge of a sea, ready to wade, to walk through water with difficulty because of the pressure of the water against your legs, in and be drowned. They walked into town. Their names were Bittering, Harry and his wife Cora, Tim, Laura, and David. They built a small white cottage and ate good breakfasts there, but the fear was never gone. It lay with Mr. Bittering and Mrs. Bittering, a third unbidden partner at every midnight talk, at every dawn awakening. I feel like a salt crystal, he often said, in a mountain stream, being washed away. We don't belong here. We're Earth people. This is Mars. It was meant for Martians. For heaven's sake, Cora, let's buy tickets for home. उसने ठंडे हाथों में सामान उठाया। उसने कहा, हम चलते हैं। एक शख्स समंदर के किनारे खड़ा है, जो पानी में टांगों पर पानी के दबाव की वजह से दुश्वारी के साथ चलने के लिए तैयार है और डूब जाएगा। वो शहर में चले गए। उनके नाम थे बिटरिंग, हैरी और उसकी बीवी कारा, टिम, लारा और डेविड। उन्होंने एक छोटा सा सफ़ेद कॉटेज बनाया और वहाँ अच्छा नाश्ता किया, लेकिन खौफ कभी ख़त्म नहीं हुआ। ये मिस्टर और मिसेस बिटरिंग के साथ हर आधी रात की गुफ्तगू में फजर के वक्त बेदार होने के वक्त एक तीसरे गैर एलानिया साथी के तौर पर मौजूद रहा। मैं नमक के क्रिस्टल की तरह महसूस करता हूँ, वो अक्सर कहता था, एक पहाड़ी नदी में बहता हुआ। हमारा तल्लक यहाँ से नहीं है, हम ज़मीन के लोग हैं। ये मरीख है, ये मरीख वालों के लिए था। खुदा के लिए कारा, आओ घर के लिए टिकट खरीदें। But she only shook her head. One day the atom bomb will fix Earth. Then we'll be safe here. Safe and insane, mad. Nonsense. Mr. Bittering looked out of the windows. We're clean, decent people. He looked at his children. All dead cities have some kind of ghosts in them. Memories, I mean. He stared at the hills. You see a staircase and wonder what Martians look like climbing it. You see Martian paintings and you wonder what the painter was like. You make a little ghost in your mind, a memory. It's quite natural. Imagination. He stopped. You haven't been prowling up, wandering, in those ruins, have you? No, Papa. David looked at his shoes. See that you stay away from them. Pass the jam. Just the same, said little David, I bet something happened. Something happened that afternoon. लेकिन उसने सिर्फ सर हिलाया। एक दिन एटम बम ज़मीन को तबाह कर देगा, तब हम यहाँ महफूज रहेंगे, महफूज और पागल। बकवास। मिस्टर बिटरिंग ने खिड़कियों से बाहर देखा। हम साफ़ सुथरे, मुहज़्ज़ब लोग हैं। उसने अपने बच्चों की तरफ देखा। तमाम मुर्दा शहरों में किसी न किसी तरह के भूत होते हैं, यादें मेरा मतलब है। उसने पहाड़ियों की तरफ देखा। आपको एक सीढ़ी नज़र आती है और हैरत होती है कि मरीखी इस पर चढ़ते हुए कैसे लगते थे। आप मरीख की पेंटिंग्स देखते हैं और आप हैरान होते हैं कि पेंटर कैसा था। आप अपने दिमाग में एक छोटा सा भूत बना लेते हैं, एक याददाश्त। ये बिल्कुल फितरी है। तख़य्युल। वो रुक गया। तुम उन खंडरात में घूम तो नहीं रहे हो, क्या तुमने? नहीं पापा। डेविड ने अपने जूतों की तरफ देखा। देखो, तुम उनसे दूर रहो, जाम पकड़ाओ। बिल्कुल वही, छोटे डेविड ने कहा। मैं शर्त लगाता हूँ कि कुछ होगा। उस दोपहर को कुछ हुआ था।
Laura stumbled, walked unsteadily, through the settlement, crying. She dashed blindly onto the porch. Mother, father, the war, Earth, she sobbed. A radio flash just came. Atom bombs hit New York. All the space rockets blown up. No more rockets to Mars, ever. Oh, Harry. The mother held on to her husband and daughter. Are you sure, Laura? Asked the father quietly. Laura wept. We're stranded, stuck, on Mars, forever and ever. For a long time there was only the sound of the wind in the late afternoon. Alone, thought Bittering. Only 1,000 of us here. No way back. No way. No way. Sweat poured from his face and his hands and his body. He was drenched in, to make someone or something extremely wet, the hotness of his fear. He wanted to strike Laura, cried, "No, you're lying. The rockets will come back." Instead, he stroked Laura's head against him and said, "The rockets will get through someday." लारा लड़खड़ाती और रोती हुई आई। वो आंखें बंद करके पोर्च की तरफ लपकी। माँ, बाप, जंग, जमीन, वो रो पड़ी। एक रेडियो फ्लैश अभी आया। न्यूयॉर्क पर एटम बम गिरे, तमाम खलाई रॉकेट जल गए। मरीख पर अब कोई रॉकेट नहीं। ओह हैरी, माँ ने अपने शौहर और बेटी को थाम लिया। क्या तुम्हें यकीन है लारा? बाप ने खामोशी से पूछा। लारा रो पड़ी। हम मरीख पर फंसे हुए हैं, हमेशा के लिए। काफ़ी देर तक दोपहर के आखिरी पहर में सिर्फ हवा की आवाज़ थी। तन्हा, तलख सोचा, यहाँ हम में से सिर्फ 1,000 हैं। वापसी का कोई रास्ता नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। उसके चेहरे और उसके हाथों और उसके जिस्म से पसीना बह रहा था। वो अपने खौफ की गर्मी में भीग गया था। वो लारा को मारना चाहता था। पुकारा, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। रॉकेट वापस आ जाएंगे। उसके बजाय उसने लारा के सर पर हाथ मारा और कहा, रॉकेट किसी दिन गुजर जाएंगे। Father, what will we do? Go about our business, of course. Raise crops and children. Wait. Keep things going until the war ends and the rockets come again. The two boys stepped out onto the porch. Children, he said, sitting there, looking beyond them, I've something to tell you. We know, they said. He looked with dismay at their house. Even the house. The wind's done something to it. The air's burned it. The fog at night. The boards, all warped, twisted, out of shape. It's not an earthman's house anymore. Oh, your imagination. He put on his coat and tie. I'm going into town. We've got to do something now. I'll be back. Wait, Harry, his wife cried. But he was gone. अब्बा, हम क्या करेंगे? यकीनन अपना काम करते रहेंगे। फसलों और बच्चों की परवरिश करेंगे। इंतज़ार करेंगे, चीज़ों को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि जंग ख़त्म ना हो और रॉकेट दोबारा ना आ जाएं। दोनों लड़के बाहर बरामदे की तरफ बढ़े। बच्चों, उसने वहाँ बैठे हुए उनसे परे देखते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हम जानते हैं, उन्होंने कहा। उसने मायूसी से उनके घर को देखा। घर भी हवा ने इसके साथ कुछ किया है। हवा ने उसे जला दिया है। रात को धुंध, तख्ते, तमाम की शक्ल बाहर से बिगड़ी हुई। ये अब ज़मीनी आदमी का घर नहीं रहा। ओह, तुम्हारा तख़य्युल। उसने कोट और टाई पहन ली। मैं शहर जा रहा हूँ। हमें अब कुछ करना है। मैं वापस आऊँगा। रुको हैरी। उसकी बीवी रोई, लेकिन वह चला गया था। In town, on the shadowy step of the grocery store, the men sat with their hands on their knees, conversing with great leisure, the time when you are not working or doing other duties, and ease. Mr. Bittering wanted to fire a pistol in the air. What are you doing, you fools? He thought. Sitting here. You've heard the news, we're stranded, unable to leave somewhere because of an inconvenience such as a lack of transport or money, on this planet. Well, move. Aren't you frightened? Aren't you afraid? What are you going to do?
शहर में ग्रोसरी स्टोर के सायादार सीढ़ियों पर मर्द घुटनों के बल हाथ रखकर बड़ी फुर्सत के साथ और आराम से गुफ्तगू करते। मिस्टर बिटरिंग हवा में पिस्तौल चलाना चाहता था। तुम क्या कर रहे हो, एम को? उसने सोचा, यहाँ बैठो। आपने खबर सुनी है? हम इस सियारे पर फंसे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से चलो। क्या तुम खौफजदा नहीं हो रहे? क्या तुम डरते नहीं हो? तुम क्या करने जा रहे हो? That